Hello students, so today we will discuss the topic normal distribution, which is very important in respect of your final examination. So let us see what this topic concludes. So first of all we will define the topic normal distribution. What is the meaning of normal distribution? So let us see. The normal distribution is a continuous distribution. मीन्स ये एक कॉन्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट है. दिस डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी रिगार्डेड एज द लिमिटिंग केस of the binomial distribution when n, that is the number of trials, is very large and neither p nor q is very small. It means क्या कि यहाँ नंबर ऑफ जो ट्रायल्स होगा वो बहुत बड़ा होगा और ना तो p और ना ही q दोनों में से कोई भी जो है सो बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होगा. तो इस केस में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मेशन होता है. सो इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सक्सेस इज क्लोज टू 1/2. मीन्स इसका जो पैरामीटर्स है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो हम इसी फॉर्म में कंसीडर करते हैं कि उसका जो प्रोबेबिलिटी सक्सेस है वो 1/2 के क्लोज है. सो द जनरल इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय f of x equals to 1 upon sigma root under 2 pi into e to the power minus 1/2 into x minus mu upon sigma का whole square. This is the basic formulas for calculating the normal distribution. Okay, तो it means हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिला. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लिमिटिंग केस है. लिमिटिंग केस इन टर्म्स ऑफ क्या कि नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारा बहुत बड़ा होगा और p और q, p दैट इज सक्सेस एंड q दैट इज फेल्योर, वो बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होगा. दोनों में से कोई फिक्स नहीं है. बट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो गिवन है p शुड बी ऑलवेज क्लोज टू 1/2. सो इन सच टाइप ऑफ केसेस वी विल अप्लाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. लेट अस सी further. Here the variable x can assume all values from minus infinity to plus infinity. Mu and sigma called the parameters of the distribution and are respectively denoted by mean and the standard deviation. तो as it is जैसा हमने बाइनोमियल में पढ़ा है, पॉइजन में पढ़ा है, तो म्यू हमारा मीन होगा और सिग्मा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा. और जो x है दैट विल बी the variable and which lies between minus infinity to plus infinity. So x is called the normal variate and fx is called probability density function of the normal distribution. ये हमें ध्यान रखना है कि हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दैट इज पीडीएफ शॉर्ट में जो बोलते हैं वो हमने कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए पढ़ा था. यहाँ जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पढ़ना है. तो दोनों में हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि पीडीएफ अगर वो है तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन वो हमारा कॉन्टिन्यूस के रिस्पेक्ट में है. वहाँ हमने दो वेरिएबल के लिए पढ़ा था, एक कॉन्टिन्यूस के लिए और एक डिस्क्रीट के लिए. यहाँ जो हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड करेंगे वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे. लेट अस सी व्हाट द ग्राफ ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सेज. सो द ग्राफ ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज बेल शेप्ड. मीन्स वो घंटी के आकार का होता है. जैसे मंदिर में जो घंटी लगा होता है उस आकार का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का शेप बनता है अगर हम इसको ग्राफ में देखें. एंड इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द मीन म्यू. मीन्स और ये जो सिमेट्रिक होता है वो मीन के सिमेट्रिक होता है. मीन्स मीन में जस्ट आप रखो और उसको ओवरलैप करो या मिरर इमेज बनाओ तो वो एक दूसरे को कवर अप कर लेगा. इट मीन्स ढक लेगा. सो इट इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट मीन. Now we will see the standard form of the normal distribution, what it concludes. So suppose x is any normal distribution and it is also denoted as capital N and in bracket mu and sigma square. So with mean mu and standard deviation sigma, then the random variable capital Z equals to capital X minus mu upon sigma has the normal distribution with condition that mean should be 0 and the standard deviation will be 1. यहाँ पे ये कंडीशन है कि इस तरह के लिए हमारे पास ये वैल्यू देता है क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का. एंड x इज द वेरिएबल व्हिच विल लाई बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. सो द रैंडम वेरिएबल z इज कॉल्ड द स्टैंडर्डाइज्ड और स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल. दोनों नाम है कि स्टैंडर्डाइज्ड बोले या स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोले. So the probability density function for the normal distribution will be fz equals to 1 upon root 2 pi either is minus 1/2 into z square. हमने जो वहाँ पे देखा था वहाँ पे क्या था हमारे पास जब हमने फाइंड किया था तो fx equals to 1 upon sigma root 2 pi
into either is minus 1 by 2 x minus mu upon sigma का whole square. So this PDF, that is probability density function of normal distribution, will give you here a 1 upon root 2 pi e to the power minus 1 by 2 z square. So let us see the graph of this distribution. Here mean equals to 0 और जो मीन के लेफ्ट में है वो भी एरिया 0.5 है और जो मीन के राइट में है that area also covers 0.5 and z will lie from minus infinity to infinity. It means क्या कि probability of success जो हमने यहाँ देखा है वो 1/2 के क्लोज रख के हमने कैलकुलेट किया है. Now on the basis of this one we have some formula related to this one, that when we have to find probability of z1 less than equals to z less than equals to z2, that is the area under the curve between any two values z1 and z2. It means the value of z will lies from z1 to z2. Then we will use the formula probability of z1 less than equals to capital Z less than z2 equals to phi of z2 plus phi of modulus of z1 if z1 less than equals to 0, 0 less than equals to z2. मीन्स कंडीशन क्या है कि z1 अगर 0 से छोटा या बराबर होता है और 0 z2 से छोटा या बराबर होता है तो हमें क्या कंडीशन लगाना है. फर्स्ट कंडीशन दैट फाई ऑफ z2 प्लस फाई ऑफ मॉडुलस ऑफ z1. मीन्स सेकेंड टर्म z2 पहले आएगा और फर्स्ट जो हमारा z1 है उस पर हम मॉडुलस अप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे. सेकेंड वन इज फाई ऑफ z2 माइनस फाई ऑफ z1. दिस कंडीशन विल होल्ड व्हेन 0 लेस देन इक्वल्स टू z1 लेस देन इक्वल्स टू z2. मीन्स अगर 0 z1 से छोटा या बराबर है और z1 z2 से छोटा या बराबर है, इस केस में हम सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे, दैट इज फाई ऑफ z2 माइनस फाई ऑफ z1. इन लास्ट केसेस फाई ऑफ मॉडुलस ऑफ z1 माइनस फाई ऑफ मॉडुलस ऑफ z2. मीन्स यहाँ पे सीक्वेंस हमारा सेम है एंड ये कंडीशन विल बी अप्लाइड व्हेन z1 लेस देन इक्वल्स टू z2 एंड z2 लेस देन इक्वल्स टू 0. मीन्स ये दोनों वैल्यू जब 0 से हमारा छोटा या बराबर हो तो इस तरह का हम कंडीशन अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में. लेट अस सी द ग्राफ ऑफ दीज फॉर्मूलाज. फर्स्ट वन इज अगेन हमने बोला है क्या कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ होगा वो हमेशा बेल के अकॉर्डिंग होगा. मीन्स जो हमारा मंदिर वगैरह में जो हम घंटी यूज़ करते हैं बजाने के लिए उसी आकार का हमारा ग्राफ मिलेगा. सो फर्स्ट ग्राफ विल बी शोइंग फाई ऑफ z2 प्लस फाई ऑफ मॉडुलस ऑफ z1. Here z1 lies the left of the mean and z2 lies in the right of the mean. And again I am just repeating that this curve is symmetrical about the mean. Next one, the graph of phi of z2 minus phi of z1. So this one is the value of z1 and z2 lie in the right part. And third one, phi of modulus of z1 minus phi of modulus of z2, and here z1 and z2 will lie in the left of this graph. So now we are able to solve some questions related to normal distribution and we will use these formulas. First of all, we will find the value of z with the standard normal variate and then we will apply the condition from these three. जो भी हमारा कंडीशन अप्लाई होता है उसके अकॉर्डिंग हम ये तीनों फॉर्मूला में से पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन. सो नाउ वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस वन. So let us see some questions. First one is, suppose capital X is the normal distribution with mean 70 and standard deviation 4. So find the probability that, first one, probability of 68 less than equals to capital X less than equals to 74. B, probability of 72 less than equals to X less than equals to 75. C, probability of 63 less than equals to X less than equals to 68. And D, probability of X greater equals to 73. So let us see the solution, how we will solve these questions. So in starting it is given that mean equals to 70. So mean equals to 70. Sigma square equals to 4, so sigma equals to 2. And we know from the standardized normal distribution that z equals to capital X minus mu upon sigma. ये formula है. Here probability of 68 less than equals to capital X less than equals to 74. It means 68 is denoted as x1, 74 is denoted as x2. So we will find
2 times z, that is first one is z1 and second one is z2. So when we find z1 we will apply x1, and when we will find z2 then we will apply x2. So let's see, z1 equals to x1 minus mu upon sigma. So z1 is 68 minus 70 by 2, that is minus 2 upon 2, so equals to minus 1. Means we get the value of z1 equals to minus 1, and z2 equals to 74 minus 70. Here 74 is the value of x2 and 70 is the value of mean, that is mu, and 2 is the value of sigma. It means क्या x2 की जगह पे हमने 74 पुट किया है, मीन म्यू की जगह 70 पुट किया और सिग्मा की जगह हमने 2 पुट किया. So we get 74 minus 70 by 2, that is 4 by 2, that is 2. So we get z1 equals to minus 1 and z2 equals to 2. Now we have to check that which formula will be applicable here to finding probability of 68 less than equals to capital X less than equals to 74. So in place of 68 we get z1 equals to minus 1, so p of minus 1 less than equals to z, and in place of 74 we will replace by 2. Now we have to find probability of minus 1 less than equals to z and z less than equals to 2. So here first formula will be applicable. Why? Because minus 1 less than equals to 0 and 0 less than equals to 2. minus 1 0 से छोटा है और 0 2 से छोटा है, और यही कंडीशन है फर्स्ट का. So we will use here first formula. So probability of 68 less than equals to x less than equals to 74 will be phi of 2 plus phi of modulus of 1. That is, our formula is phi of x2 plus phi of modulus of x1, that is z1, phi of z2 plus modulus of phi of z1. तो phi of z2 की वैल्यू 2 है और z1 की वैल्यू माइनस 1 है, और मॉडुलस लगाओगे तो माइनस 1 विल बी कन्वर्टेड इन प्लस 1. मॉडुलस लगाने के बाद जो वैल्यू आता है वो हमारा पॉजिटिव आता है. तो क्या मिला, phi of 2 प्लस phi of 1. अब phi of 2 की वैल्यू क्या होगा और phi of 1 की वैल्यू क्या होगा. बुक के लास्ट में आपके पास नॉर्मल टेबल होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. वहाँ पे हम जाके चेक करेंगे कि 2 का क्या वैल्यू है और 1 का क्या वैल्यू है. यहाँ 2 पे चेक करना है तो हम जाके देखेंगे 2.0 पे क्या है. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 2.0 की वैल्यू 0.4772 है, और 1 दैट इज 1.0 की वैल्यू 0.8184 है. सो दिस इज 0.4772 प्लस 0.8184 प्लस करोगे देन यू विल गेट 0.8184. दैट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट वन विल बी 0.8184. इट मीन्स क्या कि हम लास्ट में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से वैल्यू चेक करेंगे, जो भी वैल्यू होगा और वो पुट कर देना है. वेरी सिंपल है कि हमने फॉर्मूला अप्लाई किया स्टैंडर्ड वैल्यू से, हमने वहाँ से z1 और z2 कैलकुलेट किया, x1 और x2 को z1 और z2 से रिप्लेस किया. में जो x1 हमारा 68 था वो z1 क्या हो गया, 2 हो गया, और जो x2 हमारा 74 था वो हमारा क्या हो गया, रिप्लेस होके -1 हो गया. तो इस तरीके से वो वैल्यू शॉर्ट होके हमने कैलकुलेट किया, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको एग्जाम में नॉर्मल टेबल दिया जाएगा. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 72 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 75. So again we will solve by the same process. z1 equals to x1 minus mu upon sigma, and here x1 is 72, x2 is 75. So when we will put the value of this one, so 72 minus 70 upon 2, that is 2 by 2, 1. So the value of z1 is 1, and calculate z2 equals to x2 minus mu upon sigma. x2 is 75, so 75 minus 70 upon 2, that is 2.5. So probability of 72 less than equals to x less than equals to 75 equals to probability of 1 less than equals to z less than equals to 2.5, which gives the value of phi of 2.5 minus phi of 1. Here we will apply the formula which we have already mentioned, that when 0 less than equals to z1 less than equals to z2, जो दोनों वैल्यू है 1 और 2.5 दोनों 0 से बड़ा है. इस केस में हम सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज phi of z2 minus phi of z1. So here z2 is 2.5 and z1 is 1, so the value will be phi of 2.5 minus phi of 1. Now we will
check what is the value of 2.5 in your normal table. So 2.5 equals to 4.4938, and the value of 1 which we have used just earlier, 0.3413. So the resultant will be 0.1525. It means the probability of 72 less than equals to x less than equals to 75 equals to 0.1525. So I have solved two questions, students, and I skip two questions to solve by yourself, and I hope you will easily solve these questions. Okay, thank you.